I welcome you all to Keystone Wisdom Waves, a webinar series where we discuss on variety of topics right from getting admission to engineering till finding opportunities in different fields. I am Sharvari Kulkarni, the head of Department of Electronics and Telecommunication at Keystone School of Engineering. Students are usually not aware about the future opportunities in ENTC. To address this, we have organized a series of webinars wherein the industrial experts will shed light on various fields in ENTC. Today is our first session of this series where we will explore opportunities in field of embedded system. Embedded system is core part of ENTC. It's my pleasure to introduce today our expert, Mr. Sohal Patel. Sohal is an embedded system professional working with Co-Design, which is based in Germany. He holds an engineering degree in electronics and telecommunication and master's degree in microelectronics and VLSI design. With over 70 years of experience in embedded software engineering, he brings a wealth of knowledge to our discussion. So without spending much time, I welcome Sohal sir to this webinar. Welcome Sohal sir. Thank you so much, Kulkarni madam. I am really grateful that I would be part of this journey. Since it's the first seminar, I give the best of luck to the future. So I hope we have more such sessions, and I believe this would be truly helpful for aspiring students who are already enrolled and people who are thinking to get enrolled and maybe think embedded systems as part of their career. Thanks a lot. So let us start with few questions so Of that course, yes. we give insights to embedded system. So how would you define embedded system for those who are new to this field? Well, the modern definition of embedded systems works around a few principles. So when you say a system is an embedded systems, it usually is kind of a computational device or a computational microcontroller associated with its all resources, all part of the same functionality, and it is devised to make that functionality available on its own. So embedded means that the functionality of the hardware, the software, the mechanical parts, okay, the input output of the system, it could be a wireless system, it could be with wire, and everything all together can be put in a box, or sometimes not, but yeah, usually it's like every functionality of a system is enclosed in a particular confined space, and that would become an embedded system on its own. That is something like a basic definition, but as we can maybe explore how it works and where it could be found, maybe in the field, it may have other respects, and there would be other definitions based on how it is seen in practical life. So could you just let us know that how you started your journey with this embedded systems, and you have so much of experience. So could you just share a few of your experience or your project? Well, if you want to get a start of it, I actually was inspired to become something in science, something related to astrophysics. But eventually, it turned out that yeah, the social aspect, the parents' aspirations inspired me to get into engineering, and telecom engineering was something which was, I think, back then a lot more popular. Okay, it was an emerging branch back then. It's we're talking about 20 years from now. So back then, it was kind of pretty hot to get into this electronics and try a few things. Cell phones were becoming or picking up. They're getting popularized, and that was actually the kind of thing I would like to work in. So it was more like a trend that I wanted to get into. By and by, I realized studying the 4 years of engineering that there's a lot to be learned, and the college or the graduation was not sufficient to satisfy my need of knowledge or my questions that I had in my mind. And certainly, I think more deeper understanding was necessary that I thought. And I did my master's in VLSI. So I wanted to go deep into electronics. So I wanted to figure out how we are actually controlling the electronics as such, what happens at the lowest level possible.
and that was something which was very curious for me. I wanted to figure out क्या हो रहा है अंदर. सब कुछ बाहर से तो सब शाइनी शाइनी दिख रहा है, पर अंदर काम कैसे करेगा ये. ठीक है, तो that inquisitiveness actually inspired me to learn more. And then when I went out and started to see what happens in real life, like for example, get a job for it and search about it, I realized that this is going to be, or this was existing back then as well. That it was something which was making roads in so fast on and affecting every common life. So that was something which I started with. My projects actually, if you call them projects, I would rather call them as jobs because it was more related to products which were made by companies, and then you get into work with them. So the starting job was really hands-on electronics, so working with soldering iron, okay, getting circuits and connecting them, seeing if the continuity is working. So you test the circuits as well, and then you program those circuits with the logic that you create. So I was in a team which was a bunch of engineers just like me on different level of expertise. So I had some seniors who used to guide me through the tool set, who used to tell me what in and outs of the system is. And we started with simple parking systems. So automation in industry is the biggest place where embedded systems are used even today. So when we call something to automate, something where mechanics and control is used together, it always includes something to create and decide on the logic. And that means that there is an embedded system there which does the job. So sometimes it is easy to assume that ये सब automatically चल रहा है. That automatic is usually an embedded systems behind which is doing the job. At least one. It could be many, but there is at least something which is going on in the background. So for example, when you park or you want to get into a parking lot, you put the car there. There is a circuit which tries to detect the presence of the car, tries to open the gate. You pull up the ticket machine starts counting on the timer. You come back, you want to get out, you want to pay to the machine calculates how much you paid, and then it would then come out with a receipt saying this is how you paid, and then you can get out in the same way. So this is how it was with my first job. Then I realized that there's a lot to work with. There are parts of software, hardware, and things that we learn. So there was a basic start for me, and then it just took off. I had a chance to work with big multinationals. I worked in electrical domain, so controlling of subsystems. I also work with medical devices, which I'm right now pursuing. So it has been a journey of 17 years across different line of work, different kinds of products. So yeah, it has been interesting. Interesting journey. I would like to ask you, like, how is the demand for embedded system professional evolving? Like, if you, Uh, well, if you look at, uh, I would like to go back one step. Actually, I would like to see if we understand what embedded systems have brought to the market. What has it changed in our day-to-day life, and then we try to evaluate if that is going to remain, if that is going to fade away. Let's put it that way. So I would like to ask or answer the first part of it, which says where is it used? So where do you find embedded systems? And at the moment, I will not be able to figure out any corner of my house, especially which does not have at least something which is automated, which is something which doesn't have a software and a hardware to work with. In our day-to-day life, we have devices and gadgets that sense a lot of things from our physical world, give that information in terms of digital or analog to as a feedback to us, or store it somewhere, and everything is part of some kind of an embedded system which goes in the background. So it's not just a specific thing. There's something which is like we have tried to make everything more and more uh, intelligent, if you call it that way. And that intelligence come where we have put some logic, some kind of code, and we have to try to get the functionality of getting the data from there. Okay, so that is something which is I think embedded systems doing all the way. और अगर इसी तरह से देखा जाता है तो आपके पास हर जगह embedded systems लगी हुई है.
सो Right. आगे क्या क्या फ्यूचर है? Uh, अभी हम सोच रहे हैं कि हम एम्बेडेड सिस्टम्स को इस हद तक लेके आए हैं कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग हो जाएगा कि हम बड़े बड़े एल्गोरिथम्स को डेटा चाहिए होगा और वो डेटा हम इन सेंसर से लेके आएंगे. सो इट कुड it's practically impossible now to separate or to make a division between parts of big engineering projects without the use of embedded projects. So I think as if you want to call it that way, I believe embedded systems are going to remain for a long time to come. Integral They're not part going of away. Yeah, projects. they're not going away so soon. Right. So just a few minutes, I would like to tell students if they have any queries, they have a number on the screen wherein they can fire their questions and we'll try to answer it. Moving on to the next question, could you just let us know like what are the emerging technologies in this field? Yeah, I think We everyone have is talked about hardware and software, like both are required. yes, yes, If yeah, one true. has to go to this stream, Yeah, both of them are required. So yes, you just brief it's on true. this. So we all are actually in this kind of situation where information is bombarded to us from all parts of the world, from all kinds of things. And this comes right now. The buzzwords are coming right now is artificial intelligence or large language models, things like that. And I think these kind of systems, these kinds of data analyzing systems, okay, they Hmm? need a lot of data. And at the moment, the applications for these systems are still inconsistent. We are still trying to figure out what are we going to do with this tool. For example, AI on itself is a tool of engineering. अब इसे यूज क्या करेंगे? Yeah. क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर है. वो काफी कुछ ये कर सकता है जो हम आम आदमी सोचने के लिए या समझने के लिए टाइम ले सकते हैं. तो किसी पैटर्न को अगर रिकॉग्नाइज करना है या फिर किसी डिसीजन को बड़े डेटा सेट के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इतना बड़ा डेटा मिलेगा कहाँ से? जैसे कि अपने पेशेंट्स को मॉनिटर करना है, फॉर एग्जांपल. जैसे अरे आपके पास एक पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर है और आप इतना सारा डेटा इकट्ठा कर पाएंगे पेशेंट्स के, और वो पेशेंट्स का डेटा फिर बाद में आप दे पाएंगे किसी एआई के या मॉडल को, जो उसे एनालाइज करके ये बताएगा कि ये बीमारी या ये चीज़ कहाँ जाएगी, इसका क्या डायग्नोसिस होगा. उसी हिसाब से आप व्हीकल्स देख लीजिए आजकल जो आ रहे हैं, स्मार्ट व्हीकल्स के नाम पे, जो कंप्यूटर विजन जो है, इट्स Hmm. ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मशीन टेंड्स टू डिसाइड वेदर द रूट ऑफ द व्हीकल based on the obstacles it observes, based on the sensor data it collects. Okay, is it going to make a decision to drive, to stop, to move, to sideways or not? So these kind of systems, they are pretty much hardcore real-time systems. उनका प्रोसेसिंग इज सेंसर का डेटा लेके प्रोसेस करके व्हीकल को स्टॉप करना, उसे गाइड करना, ये सब चीज़ों में एआई का मॉडल आ जा रहा है. ठीक है, हमारे पास वो है. अब Hmm. हमें चाहिए कि अब डेटा कहाँ से आएगा, इतना सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? हम Right. किस तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि ये गाड़ी अपने जगह पे ही चलेगी या उन पेशेंट का डायग्नोसिस करेक्ट होगा? जितना ज़्यादा अच्छा डेटा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा ये मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएंगे. तो इस डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम एम्बेडेड सिस्टम्स का उपयोग लेते हैं, क्योंकि हर सेंसर आफ्टर ऑल ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है. फिजिकल डेटा को डिजिटल डेटा या एनालॉग डेटा में ट्रांसलेट करता है, और ये ट्रांसलेटेड डेटा फिर हम जब इन एआई मॉडल्स को या फिर इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को देंगे, तब जाके हमें और बेहतर उसका उपयोग दिखाई देगा, और बेहतर हम इसका कहीं एक सोल्यूशन लेके आ सकते हैं. So we can तो say everything is dependent on one another. Like if you आई need थिंक हाँ हाँ बिल्कुल. और एम्बेडेड सिस्टम्स को ये कहना कि हाँ वो इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, आई थिंक इट इज अ बिट टू हार्श. ये ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है. उसका सही मतलब ये है कि अब हमारे पास एक ऐसा टूल आ गया है जो एम्बेडेड सिस्टम को उसकी चरम सीमा तक यूज कर सके. right. हम ऐसे सेंसर तक आज आज आ गए हैं जो एटमॉस्फेरिक डेटा को ले सकता है.
इन्हें मॉट्स कहते हैं। अब आप शायद विकिपीडिया या कहीं पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये इतने छोटे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं which can be suspended in Mm-hmm. atmosphere, and then you can predict or actually you can collect the data from those sensors. They are in thousands, okay, and they can be sending data across wirelessly, and then with that data you can actually predict real time wind formations, okay, अगर कहीं पे लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, you can do such modeling, क्योंकि अब तक सुपर कंप्यूटर्स पे ये मॉडलिंग होते थे एंड वी वर प्रीटी गुड एट दैट, but with this kind of technology right now that we can use the data, I think this is going to be a very good combination of hardware, electronics, and the latest technology that is generated by the AI, and the things that are going to take us to the next step of learning what our nature is doing around us. And not just the nature, you can we have seen demonstrations where such particles or such nanobots can be used, a simple sensor, एक sensor और एक microcontroller chip और एक छोटा सा wireless, वो you can actually inject it, and then that could be part of the diagnosis of a patient, okay, and that kind of medicine is kind of the future that we are going into. Yeah, So we I have such think, yeah, devices like which we yeah, connect I with think this, IoT. yes. Yeah. So this is where we are going to, and I think we are. There is no limit to our imagination. In the same way, there would be no stop to this kind of work. ये काम कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आज कल अगर किसी ने कुछ नया खोज लिया तो शायद हमने कुछ नया सीखना पड़ेगा उसके लिए, पर ये तो चल ही रहा है। रिव्ह्यू दिला की तुम्हाला असं आहे की तुम्ही माहिती. Okay. So that was nice where we know that everything is going to be integrated and dependent on one another. Yeah. So I would like to ask you one more thing, like what would you advise to students who are passionate about embedded system? I think like they should have the knowledge of entire electronics, right? All the basic things that we study. Besides, Yes, I you think, can add your things. yeah, I think for the students who are pursuing embedded systems as a career, I think the first thing is to be patient with what they are up to. Okay, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 साल का अगर कोर्स अभी मैं ले रहा हूँ तो चार Hmm. साल के बाद जो मैंने सीखा है वो चीज़ तुरंत अप्लाई होगा। और मूर्स का लॉ अगर आपने सुना है, ठीक है, Yes. वीएलएसआई का एक बेस लॉ तो नहीं है वो, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। Yes. टू कॉल Right. इट एज अ लॉ इज काइंड ऑफ टू हार्श, बट या टू कॉल इट एज एन ऑब्जर्वेशन कि around 1.52 years में the amount of Quite true. circuitry is twice. So you get more computation, you get more circuits on the same piece of die जो Hmm. आपका सिलिकॉन का साइज है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाता है तो 3 साल या 4 साल के अंदर आपने मूर के लॉ के हिसाब से आपका कोर्स तो नहीं बन पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। सही हमने बात. कुछ लैंग्वेजेस सीखनी है, हमें कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, और उससे इतना कॉन्फिडेंस ले लेना है कि जब आप फील्ड में जाएंगे या आपको ऐसा कोई काम करने का मौका मिले, ठीक Hmm. है, तब आपका दिमाग इतना खुल जाना चाहिए कि जो नए आइडियाज को ले सके। क्योंकि कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट फील्ड्स होती हैं जिनमें हम एम्बेडेड सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, Hmm. उनमें यूजुअली प्रूवन टेक्नोलॉजी होती है। हम घर में या कंज्यूमर में या अपने अंदर या अपने साथ अगर कोई किसी चीज को यूज करते हैं तो एटलीस्ट वो ट्राइड होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, Right. ठीक है। That's और तो उस हिसाब से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे एकदम से काम नहीं करते। वी hmm. स्टार्ट यूजुअली मतलब ऐसा कोई लकी होता है जो एकदम कटिंग एज पे पहले दिन से काम करे, बट जो यूजुअली इंजीनियरिंग जॉब्स होते हैं या जो काम होता है वो यूजुअली ऐसे वहां से शुरू होता है। तो वहां पे एक तो पेशेंस रखना है कि हम जो पढ़ते हैं, जो हमें मिल रहा है इंफॉर्मेशन, यूजुअली कटिंग एज से न्यूज़ बनती है, ठीक हाँ. है। पर वो टेक्नोलॉजी जब आते आते फिल्टर होते होते जब हमारे हाथ तक आती है या हम उसे बना सकते हैं या उसके साथ हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, वहां तक आने के लिए उसे टाइम भी चाहिए और Hmm. हमें भी उसे सीखने का मौका चाहिए। तो ये तो एक चीज हुई, पेशेंस होना चाहिए Hmm. नया चीज सीखने का। और एज एंड व्हेन योर करियर प्रोग्रेसेस, कोई जूनियर से लेके जब सीनियर का ट्रैवलिंग होता है, तो सबसे पहला चीज होता है कि वो उस चीज को मान ले कि जो पुराना सीखा हुआ है वो शायद अब किसी नई चीज से रिप्लेस हो जाएगा। सो एवोल्यूशन इज पार्ट ऑफ इट। Right.
And So you, continuous learning is also a part of oh life. yes, 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 yes. So you always have to open your mind for that. और रही बात स्किल्स की, तो स्किल्स में मैं डेफिनेटली एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि फॉर पीपल हु हैव येट नॉट डिसाइडेड कि मुझे सॉफ्टवेयर पसंद है या मुझे हार्डवेयर पसंद है, मुझे Hmm. लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि वो तीनों में थोड़ा थोड़ा अगर कुछ सीख लेते हैं, कोई एक अच्छी चीज सीखनी है। जैसे Right. आपने हार्डवेयर पे अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको वो उस चीज में एटलीस्ट उतना इंटरेस्ट या उतना डीप में जाना है, जो शायद आपका करिकुलम सीमित रहेगा। आप अगर उससे दो स्टेप आगे जाके कुछ नया ट्राई सोचें या फिर कुछ पढ़ें, और आजकल यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है, so you can हाँ. just go through those things, see if that makes sense to you. Okay, try to engage with people who are doing this. There are forums online, LinkedIn है, Reddit है, ऐसे tools से you can get into in touch Even with those hands kind of on groups. करने चाहिए, like they should try it. छोटे Yeah, छोटे से they can try. yeah, this is I think if you look at what I have in my hand right now, Yeah, ये कुछ I think these kind of things are available. in China market. से आता है तो dirt cheap actually, but if you look at this kind of thing, so this is kind of hardware designing और hardware engineering में, तो यहाँ से शुरू किया, या फिर किसी ने बोला कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर ज्यादा पसंद है, तो एम्बेडेड सिस्टम्स का ये फायदा है, या फिर एक प्लस पॉइंट है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के Okay. करीब ही आ जाता है। इट्स द बाउंड्री बिटवीन व्हाट डिफाइंस अ हार्डवेयर एंड व्हाट डिफाइंस अ सॉफ्टवेयर। So Right. we are because we are building logic on top of the hardware, which is Right. right embedded। जो जो रैम होती है, जो फ्लैश होती है, वो Mhm. उस चिप के अंदर होती है यूजुअली, और हम काफी क्लोजली बात करते हैं हार्डवेयर के साथ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाता है, तो आपने अगर सॉफ्टवेयर कम पढ़ा है तो भी आप एम्बेडेड सिस्टम्स ठीक से कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सीखा है और आपको इंटरेस्ट है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने में या कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनाने में, तो सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे हैं, तो देर आर गुड सॉफ्टवेयर जॉब्स अवेलेबल in embedded systems. So Right. it's very easy for people to contribute or start contributing in this kind of work. So I would certainly encourage people who start, पहला तो patience, और दूसरा किसी एक स्किल या दो स्किल के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करना है। अगर कोई मुझे बोलेगा आज के टाइम में एक एक लैंग्वेज है सी, आई थिंक Mhm. सबको पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में। हाँ कई है, लोग बोलते हैं is ये encouraged. पुरानी ये पुरानी हो गई है, पर यहाँ से हम लोग सी लैंग्वेज का सिमेंटिक्स पढ़ते हैं, पर साथ साथ में अगर थोड़ा बहुत लॉजिक कैसे बनता है वो सीख जाते हैं, तो हम कंप्यूटर से बात आसानी से कर सकते हैं, या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। सी Right. अभी भी उस चीज में अच्छा है। इट इज हाँ. नाउ, या, और आई थिंक इफ यू नो अबाउट रस्ट, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक इमर्जिंग लैंग्वेज है। दे आर सेइंग कभी कहीं शायद वो रस्ट रिप्लेस कर देगा सी को। मैं Oh. पर्सनली चाहता हूँ कि एक अच्छा कंपटीशन बने दो लैंग्वेजेस के बीच में। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सी रहेगा, मैंने पहले वही सीखा था। पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सीख रहे हैं, कहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, और sometimes just being part of that discussion by as an audience, okay, you can learn a lot. So I would keep inspiring young generation to just go ahead, try out a few of this electronic stuff, few of the computer languages, and see if that works for them. Right. So we have one question Yes, from please. Utkarsh. Should I do my master's in embedded system? Yeah, So of course. I would encourage people to keep on learning. And if right. you are doing masters actually was for me was an eye opener। जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का पढ़ाई का जो सिचुएशन था, या जो जो ऑर्डर में पढ़ाई करते थे, ओके, आई लर्न कंप्लीटली न्यू थिंग्स व्हेन आई डिड माय मास्टर्स। और उसमें मेरा एमटेक था, तो अभी शायद क्या चल रहा है वहाँ पे मुझे खास आइडिया नहीं है, पर उस वक्त जब मैंने एमटेक किया था तब एमई और एमटेक के अंदर सिर्फ एक फर्क था कि आपके एक साल का प्रोजेक्ट होता था, और एमटेक में या और एमई में 6 महीने का होता था। And आई थिंक यही एक डिफरेंस मुझे लगा, जो मेरे साथ एमई करते थे और एमटेक करते थे। तो जब मैंने वो किया तो मुझे आइडिया आया कि एक डेप्थ जो मुझे चाहिए थी, जो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला था बैचलर्स करते करते, वो मुझे
बहुत अच्छा लगा ये मास्टर्स करने के बाद. सो इफ यू आर इनटू इट एंड यू वांट टू डू अ मास्टर्स, आई थिंक इट्स गुड. बट इफ यू आर डूइंग Bachelor's इट is you're learning everything. Master's is you're learning a specific something thing. specific, That something phase specific. and Yes. So specific. it kind of yeah, if that's motivating you, I think you should go for it. True. Good. Uh, could you just tell us like what are the companies related to embedded system? Oh, certainly. I really wonder कि अभी कौन ऐसा कंपनी या प्रोडक्ट वाला होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके कंपनी या उसके प्रोडक्ट के साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड के बज़वर्ड्स हैं, जैसे एआई पावर्ड हुआ या Hmm. मशीन लर्निंग पावर्ड हुआ या कुछ जो ट्रेंड में है वो ना हो. तो कल मैं क्रिकेट देख रहा था, और कल ये ध्यान आ रहा था कि जो स्टम्प्स होते हैं, ओके, दे आर हाईली इंजीनियर्ड एम्बेडेड डिवाइसेस. Great. तो आपके स्टंप के अंदर अब ये सेंसर आ गया है कि वो मोशन डिटेक्ट करता है. वो अंदर एक्सेलरोमीटर है. जब उसके ऊपर से बेल गिरती है तो वो ब्लिंक करेगा. यू गेट Great. अ विजुअल इंडिकेशन कि यहाँ पे एक्टिविटी हुई है स्टंप के साथ. सो स्निकोमीटर देख लो, ठीक है. यू आर you're using one technology on a completely different place. It's the beauty of engineering actually, कि आप एक technology को लेंगे and you will try to apply it somewhere where no one have thought about, and you try to create a product or a market for it. ठीक है. अब आपके जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे पास कंपनियों की लिस्ट निकलेगी. हर Great. कोई, जहाँ मोबाइल कंपनियां, ठीक है, दे आर बेसिकली डिजाइनिंग एम्बेडेड सिस्टम्स बेस्ड मल्टी सिस्टम. सो एक मोबाइल फोन एक्चुअली एक बड़ा सिस्टम है. उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो खुद अपने आप में एम्बेडेड डिवाइसेस हैं. ठीक Great. है. एक कार का हमने एग्जाम्पल पहले ही लिया था. कार Hmm. भी वैसी है. ठीक है. एंटरटेनमेंट सिस्टम itself इज एन एम्बेडेड डिवाइस. बट देन देर आर अदर पार्ट्स ऑफ द कार विच आर लाइक आपके रेन सेंसर हुआ. Ah, ऑटोमेटिकली जब बारिश आती है तब आपके वाइपर शुरू हो जाते हैं. इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम. वो अपने आप में काम करता है. तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम. तो ये कहना कि कोई एक एम्बेडेड सिस्टम बनाने वाली कंपनी है या ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसमें अगर उसे कुछ लॉजिक से कुछ कंट्रोल करना है उस hmm. प्रोडक्ट को, Right. तो डेफिनेटली उसके पास एक इंजीनियरिंग की टीम होगी जो एम्बेडेड सिस्टम्स को डिजाइन कर रही होगी. तो मैंने आपका जवाब इस तरह से देने की एक कोशिश की है. आई नो यू मे नॉट फाइंड इट satisfying, but I think No, that's whenever fine. Like, someone whenever someone wants to bring up a product, they would like to consider getting experts on hardware design, on mechanical design, software design, so that they can build up an embedded systems, and then the product is complete. So great. that's where I would get this answer to. There is one more question. I'm happy that people are sending questions. What I are as well, yes. yeah, what are the responsibilities and job descriptions for embedded system engineer? So whenever, so I work as a consultant, and I usually actually get resumes at the end of my consultation as part of the job, that I have to get the candidate who is Right. going to replace me usually. So in most of the cases that I sit with the team that is going to get the person. So we sit together, we figure out what is required for the particular product. Okay. So what we think is most important is about uh, the description of the job. Okay. It should be different from the description of the work. जॉब के साथ आपका प्रोडक्ट एसोसिएटेड होता है. ठीक Hmm. है. पर कई बार कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो रिगार्डलेस प्रोडक्ट पे काम किसी ने किया है नहीं किया है, उसे वो चीज़ के बारे में इतना तो पता होगा ही कि वो नया सीख सकेगा. तो हम बेसिक जॉब या वर्क का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो थोड़ा सा आसान कर देते हैं, जिसमें हम लोग यूजुअली लिखते हैं कि अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है तो Hmm. हम सी सी प्लस प्लस के ऊपर ध्यान देते हैं एम्बेडेड के लिए. ठीक है. एम्बेडेड सी सी प्लस प्लस, Yes. इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन द नॉर्मल Ah, सी एंड सी hmm. प्लस प्लस. Okay, and then we see if that person is ever used a microcontroller or has interacted with terms like UART, SPI,
या कोई कैनबस या protocols. ऐसा कोई, या जो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूजुअली एम्बेडेड डिवाइसेस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, उनके साथ अगर वो उनका थोड़ा बहुत आइडिया है उनको, तो। और डेफिनेटली अगर बड़ा सिस्टम है सॉफ्टवेयर का, तो किसी आरटॉस पे काम किया हो जिसमें टास्क मैनेजमेंट का पता हो, जिसमें रियल टाइम का कोई एलिमेंट उन्हें आइडिया हो। ठीक है, Hmm. तो और मोस्टली अब ऐसा हो गया है कि जितने टूल्स हम लोग यूज करते हैं उसमें एक डिबगर ऑलवेज होता है। तो अच्छा. हार्डवेयर के साथ अगर किसी को जरा सा भी इंटरेक्शन करना हो तो एक डिबगर चाहिए। सॉफ्टवेयर कहाँ रुक गया, कहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा, क्या प्रॉब्लम आया था, तो उसको आप देख के तो बोल ही सकते कि अब ये नहीं चल रहा, पर कहाँ क्यों नहीं चल रहा, कोड कौन सी जगह पे आके फंसा है, तो उसको डिबगिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती है। अगर आपको वो पता है तो वो एक डेफिनेटली होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। और बाकी फिर डिपेंड करता है हम किस सीनियोरिटी की बात कर रहे हैं उस जॉब के या फिर उस टास्क के लिए। तो कई बार उसमें टीम और मैनेजमेंट और ये सब की भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना है दूसरे लोगों के साथ। और अगर हार्डवेयर का हुआ तो फिर उसमें कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें डालनी पड़ती हैं, जैसे कि किसी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करवाना है आपको। ठीक है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए बेसिक एटलीस्ट। सो वो काफ़ी ज़रूरी होता है एम्बेडेड सिस्टम्स के जॉब्स के लिए। तो हम देखते हैं कि ये कैंडिडेट अगर, हाँ फ्रेशर की बात छोड़ें तो, अगर फ्रेशर है तो हम लोग ये तो डेफिनेटली चाहेंगे कि उन्हें और कुछ नहीं तो कम से कम इच्छा हो ऐसी चीजों, सब चीजें करने की और सीखने की। सो दैट इज समथिंग दैट वी इंश्योर दैट दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन। So what you expect from freshers? Like अगर कोई fresher का interview हो or you need an intern or someone like that, then what is expected and what type of questions are there? हंगर, हंगर, भूख। Okay. जी हाँ, Hunger. जी हाँ, Okay. सीखने की भूख। Right. और ये Willingness to सीखना learn. जरूरी नहीं है कि किसी मेंटर से सीखे, किसी इंसान से सीखे। जो उसे दिख रहा है, जो उसे प्रॉब्लम आ रहे हैं डे टू डे में, किस तरह से वो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ के लिए अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स होते तो ये चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई भी नया आए उसे डिप्रेशन ना हो जाए पहले दिन से। तो हम चाहते हैं कि उनको भी एज एन इंटर्न वी डोंट वांट टू पुश देम सो हार्ड, बट एटलीस्ट वी वुड लाइक टू हैव ए ओपन डिस्कशन कि ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट यू थिंक यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। सो दैट्स what encourages me to interact with young guys, because they show those kind of hunger. Okay, Right. and then it works so nicely. There is one more question, Sohal. Yes. Is VLSI design and embedded system same? You you're putting me to the brink of the same kind of, मैं हाँ बोलूंगा, लेट्स कॉल इट सिमिलर बट नॉट सेम। ओके, Right. आपको वीएलएसआई डिजाइन Like, करना है तो, या वीएलएसआई डिजाइन करना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लॉजिक के साथ डील करना है, एक आधन लैंग्वेज आनी चाहिए। और अब तो मैंने एक्चुअली एक चीज आपके लिए रखी थी और वीएलएसआई का नाम लिया, तो कुछ होता है एसओएम। yeah. ओके, एसओसी होता है, एसओएम होता है। तो ये है, मेरे हाथ में जो चीज है वो एक बोर्ड है। ठीक है, Hmm. इट्स अ जनरल पर्पस बोर्ड। Yeah. इसमें और ये छोटे से बोर्ड में फर्क है कि ये जो छोटा सा बोर्ड है उस पे आप लिनक्स नहीं चला सकते Hmm. थियोरेटिकली। ओके, और इस पे लिनक्स चलेगा, क्योंकि ये है एक ऐसा बोर्ड जो लिनक्स के लिए, आई थिंक आई कैन शो यू बाय ओपनिंग इट। लुक, ये एक बोर्ड निकला है इससे। Hmm. ये होता है एक सिस्टम ऑन मॉड्यूल, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर है, काफ़ी पावरफुल, Hmm. करीबन 500 मेगाहर्ट्ज का, और अंदर 1 गीगाबाइट की मेमोरी है फ्लैश, जिसके अंदर आप लिनक्स का सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। Is it like और Raspberry Pi? Like, इट like इज, या ऑफ कोर्स सिमिलर, that. पर ये इंडस्ट्रियल है, बिकॉज Okay. रास्पबेरी पाई इज मोर जनरल पर्पस। आप उसके ऊपर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके यू कैन एक्चुअली वर्क विद इट। ओके, Hmm. रास्बियन जो है उसका, डेबियन का पैकेज, तो यू कैन वर्क विद दैट। बट ये एक स्पेसिफिक एम्बेडेड लिनक्स है, ये मॉडिफाई नहीं किया जाता।
आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा। इसे Hmm. क्रॉस कंपाइलेशन कहते हैं। वी कैन टेक इट अप एज अ स्पेसिफिक टॉपिक लेटर, बट Yes. मेरे कहने का मतलब है ये एक सिस्टम ऑन मॉड्यूल है, इट्स अ मॉड्यूल। जब Hmm. ये प्रोटोटाइपिंग के लिए होता है तो इस ऐसे किसी बोर्ड में रख के इसको हम लोग ट्राई करते हैं। इसके इंटरफेसेस यहाँ पे खुले हुए हैं रास्पबेरी पाई की तरह। Hmm. 40 पिन का है इसका हेडर, एक एग्जाम्पल है। पर Hmm. अगर आपने सब कुछ ट्राई कर दिया, ये सब चलने लगा, तो अब आप अपने प्रोडक्ट में सिर्फ ये डाल दीजिए और फिर आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। ये है सिस्टम ऑन मॉड्यूल। इसमें आपको ये सब कुछ डिजाइन नहीं करना। वीएलएसआई में अब जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो Hmm. सिस्टम ऑन चिप का हो गया है। एक ही चिप के अंदर आपके पास सब कुछ आ रहा है। एक एम्बेडेड लॉजिक है जो आप एफपीजीए कहते हैं, ठीक Yeah. है। एक अदद या एक से ज़्यादा आर्म के कोर्स हैं जिसके अंदर आप मतलब हार्ड कोड हैं, सो दे आर ऑलरेडी देयर। यू कैन एक्चुअली एंगेज विद दोज कोर्स एंड मेक अ लिनक्स सिस्टम ऑन टॉप ऑफ दैट। So to call it as embedded system, FPGA, I think this is a system on chip is actually kind of the best of two worlds going together. एक लिनक्स इंजीनियर भी उस पे काम कर रहा है, ठीक है। Hmm. एक हार्डवेयर इंजीनियर भी उस पे काम कर रहा है, एफपीजीए का काम, जो वो सीपीएल सॉरी वीएचडीएल और इस पे वेरिलॉग पे। साथ साथ में एक सिस्टम इंटीग्रेटर भी काम कर रहा है उसके ऊपर, जो ये खोज रहा है कि कौन सी सिग्नल एफपीजीए के पास रहेंगी, कौन सी सिग्नल अंदर के आर्म प्रोसेसर के पास रहेगी। वो एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर का काम है, ठीक है। तो ये सब एक साथ हो रहा है एक ही में। तो ये कहना कि वो कौन बेहतर है या क्या है, तो ये है एक आपके पास आंसर। तो ऐसी चीज़ें जहाँ यूज़ होती है वहाँ पे यूजुअली डेवलपमेंट इतना रैपिड हो रहा है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक अपना खुद का आईसी बना सके केपेबल। तो आप फिर इस तरह के सोल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप वाले सोल्यूशन में जाते हैं और फिर आपको यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Right. So it depends upon application whether to go यस, for embedded or सर्टनली, go for सर्टनली, VLSI. यस। सो अगर कोई ये बोल रहा है कि ये बेहतर है, ये बेहतर, आई थिंक वो आपके खुद का कौन सा कलर पे पसंद आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट समथिंग which can be derived straight away. Right. There is no winner in that. Everyone is a winner. Right. Everyone is a winner. Yeah. True. Uh, Thanks a lot, Sohal, for sharing your knowledge with us. And few of the questions also we had on the same topic, right? And I hope that the students have got the answers for that. And even they have got the insight, like what exactly is the embedded system and how you can pursue career in it, right? So thanks a lot for giving time to us. And we would like you to join again. Oh, certainly. That would be something which I would like to thank you as well for, to give me the opportunity to talk. And I'm not saying that I have all the answers. Okay, we can find answers together as well. But Right. it's certainly a good start where we have a platform to connect to the students who are actually having some ideas, but they don't know what to ask, where to ask. I think this gives the platform to ask such questions and make it easy for them. So I don't expect, or I actually expect people to come up with more questions once they see the uploaded Video. stream. Okay. And then if they can reach out to you, maybe you can pass on the questions and then we can address them as well. Sure. But So those who still have questions can set the question on the same number. We will make sure that we answer your questions. we'll try to. We'll try Right. to. We'll try to answer your Yes. questions. Yes. But it was wonderful to have an engagement live with you. This was also for the first time for me, the first live such kind of an event. So thank you for making it possible. And I wish you, Keystone, and particularly your department, Sharvari, all the best for the future. Thanks a lot. Take care. And I think this is it. Bye Yes. for now. Yeah. Thank you. Thank you all for joining.